Hi friends, welcome to the Expertsedge. So here is our topic time speed distance. This is a second video on it. Okay? Particularly we are doing distance constant concept, and in that we are doing level 2 questions. In the last video we have done a easy wala part, that is level 1 questions, right? Now in this we'll see the level 2 questions. So warm up level 1 questions we already did, right? Now in this we'll be doing the application based level 2 questions, and also we'll see some ShortCAT questions. Okay, so let's get started. So this is a question. A person is traveling from station A to station B. This is station A. He is going to station B. There is some station C which is at the distance of 1/3. Similarly, distance station D, this is also at the 1/3, and last is also 1/3. So you can see 1/3 distance. So basically my distance is constant in this case, right? और जब भी distance constant होता है हम क्या करते हैं? Speed is always inversely proportional with the time. Okay. Also note here 3/4 of the usual speed. Okay. Just remember जो भी of या than के बाद होता है वो हमेशा क्या होता है? बेस होता है, और बेस हमेशा डिनोमिनेटर में आता है. ठीक है. सो यहाँ पे जो मेरा 4 है, 4 रिप्रेजेंट्स व्हाट? यूजुअल स्पीड. 4 का 3 हो गया. सिमिलरली 5 एंड सो ऑन सो फोर्थ. ठीक है. सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस. As the distance is constant, right? So I can consider this AC as distance constant. Now what is the speed का ratio here? Speed का ratio is 3:4. So अगर मेरा स्पीड का रेशियो 3:4 है, टाइम का रेशियो क्या होगा? 4k and 3k, right? And in this case, by how much he is getting late? He says that it is 40 minutes late from A, right? So this part. So I know the 3k से 4k, that is 1k late. So 1k should be equal to 40, right? So मेरा k आ जाएगा 40. So usual time. What is this? Usual time. Denominator, as I said, it is usual time. So usual time is 120 minutes. Okay, so I hope this is clear. And in this case, he is late by 40 minutes. So यहाँ पे तो 40 मिनट late हुआ है. Now the second patch. In the second patch, I can consider as a CD constant. Okay, so अगर मैंने CD को constant ले लिया, so what is the ratio of speed? Speed का ratio is given is 4/5, and time का ratio it will be 5/4. Don't use the same constant k, otherwise you will use the value k का 40 ही. नहीं, कुछ दूसरा constant देते, let's say x. Now how will you get the x value? I know usual speed. What is the usual time? What is the usual time? Is 120 minutes, right? This is a usual time. Usual time is 120. हमारा usual क्या है? 4x. So 4x should be equal to 120. So that means x should be equal to 30. So in this patch, he is getting late by 1x, right? 4x to 5x, and x has come out to be 30 minutes. So here he is getting late by 30 minutes. Right? X is nothing but 30. Now in the last patch, just let me take a different color again. Last patch is dB. dB again constant. Now what is the ratio of speed he has given? In the last case, 5/6. So this is 5/6. तो टिपिकली आप देख रहे हो कि एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है. ये सेम क्वेश्चन हमने कर चुके थे लास्ट वीडियो में, राइट? सो इट्स जस्ट वन. लेट्स से आई टेक सम y वैल्यू, राइट? इट इज 5y. अगेन व्हाट इज द यूजुअल टाइम? यूजुअल टाइम इज 120. So I'll again equate 5y with 120. So I'll get y as 24. And here again it is getting late by 1y. So 1y late, so technically nothing but the late by 24 minutes only. So यहाँ पे 24 minute again late. So how much total he will be late? Here 40 minutes late, here 30 minutes late, and in the last patch 24 minutes late. That is nothing but 94 minutes should be my answer, right? So answer for this particular question. So basically एक question में 3 question थे छोटे छोटे वाले, right? Now let's look at the next question. Ram and Shyam started walking towards each other at 9 a.m. from Jaipur and Kanpur respectively. Speed is given 70-90. They meet at Delhi, have a lunch together at 10:39. They again start
walking towards their destination. Ram reached Kanpur, right? So if I want to represent it diagrammatically, it would be something like this, right? They meet here somewhere, right? They take a lunch. I don't know when they reach here, right? फिर 10:39 को निकलते हैं दोनों, and respective Ram goes to the Kanpur. Ram reaches at 12:27 and Sham reaches here. That value is not given. Okay, so what is he asking? How much time they have spent together? Let us take what I'll do. This part, right? This part is particularly traveled by Ram as well. अगर मैं इसको ऐसे दूं, Ram का initially Ram ने यहाँ से यहाँ travel किया. They had a lunch. Ram traveled from here to here also, right? Here is Ram. Here is also Ram. Sham ने यहाँ से यहाँ travel किया था, and Sham then again traveled from here. So this particular distance Delhi to Kanpur is traveled by both of them, Ram as well as Sham. ठीक है? Now see the application of distance constant. So what I'll do, this distance Delhi to Kanpur वाला जो distance है, Delhi से Kanpur वाला, I'll make this distance as constant. I'll make this distance as constant. Okay. Now what is the speed of them? अगर distance constant है तो speed will be inversely proportional to time, right? So Ram and Sham. So what is the speed of Ram? It is 70 and its speed is 90. What is the ratio? Basically 7:9. So time का ratio क्या होगा? 9k and 7k. Now किसी का time आपको पता है क्या? Yes. राम का पता है. उन्होंने lunch 10:39 तक किया और 10:39 को राम निकला and he reached here at 12:27, right? So 10:39 से 12:27 कितना टाइम होगा? पहले तो 10:39, just because it's a complicated time, I'll write it here. 11, 12, 27. So 10:39 से 11 कितना टाइम होगा? 1 hour is of 60 minutes. So 39 हो गया. तो बेसिकली यहाँ तक 21 minutes होगा. और 11 से 12:27 is 1 hour 27 minutes. So basically 60 plus 27, 87 minutes, right? So what is the total time here? It would be nothing but 108 minutes. So Ram took 108 minutes after their meeting, and I know what is the time of Ram? 9k. So I should equate 9k with 108. So my k would come out to be 12. So what does that mean? That this guy Sham took 12 sevens are 84 minutes to travel this same distance, right? This same distance. So this Sham guy traveled from Kanpur. ये कानपुर से निकला था, right? कितने बजे? 9 बजे. 84 minutes means what? 1 hour 24 minutes. That means this guy Sham must have reached here at what time? 9 बजे के बाद 1 hour 24 minutes, basically 10:24. So 10:24 को भी राम भी यहाँ पे आ गया था, similarly Sham भी यहाँ पे हो गया था, right? They reach here at certain time. Now they reached at Delhi in how much time? 10:24, and they stayed till how much time? 10:39. That means उन्होंने लंच कितने देर किया? 15 मिनट किया होगा, है ना? 10:24 से लेके 10:39. What is the time gap? It's nothing but 15 minutes. So they must have taken lunch for 15 minutes. So answer of this particular question is 15 minutes. Okay, so I hope this particular question is clear. Now let's go to the next question. Okay, again a very easy question, guys. This is the only issue with this topic, right? Believe me, geometry and PNC, they are literally easy because you have particular theorem. एक theorem उसी का limitation है, वही लगेगा, right? But when I talk about this topic, time and work, time, speed, distance, profit, loss, these all are man to man related, right? You just think of any concept or any scenario, you can generate a question, right? So in such topic you need to be conceptually thorough, then only you can crack this question or this topics, right? अब ये देखो, ये daily scenario बहुत बार आपके साथ भी होगा. क्या है ये? I started for a station which is half kilometer from my home. ठीक है, just let me. Right, so this is the home and this is station. कितना distance है ये?
Now time is given, speed is distance is given, speed is given. So first I should take out time. What is the time? Distance by speed. Distance is half kilometer, speed is 3. So basically he takes every day 1/6 of the hour. What is 1/6 of the hour? 1/6 of 60. So technically he takes 10 minutes every day to go from home to station. Okay, that is his daily routine. One day, after 2 minutes, he realized that he has forgot the tickets at home, right? What is the station distance? This is nothing but 500 meter. Half kilometer is 500 meter, right? Now, in 2 minutes, where he will be, let's say he will be certain distance. Let's say this is as A, this is home, let's say as B, and let's say station as C. अब उसका speed क्या था? 3 kilometer per hour, right? 3 kilometer per hour, that means he travels in 1 hour 3 kilometer. That means in 60 minutes he travels 3000 meter, right? That means in 1 minute he travels, just divided by, that is 50 meters. So 2 मिनट में कितना आगे चल गया होगा वो? 100 मीटर, राइट? सो ये जो A पॉइंट है, that is 100 मीटर away from his home. Now understand this. उस पर्टिकुलर दिन उसके साथ क्या हुआ होगा? Right, he is at point A. Now at point A he realizes that he has forgot ticket at home, so he must go to home again, and again he need to go to C, right? And now he has two options here. Just what I'll do, I'll deliberately make distance ABC as constant. ठीक है, जस्ट सी द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ इट. हाउ एम आई डूइंग इट? 10 मिनट्स उसको नॉर्मल डेली लगते थे जाने आने, वन वे जाने को, राइट? नाउ एट दिस मोमेंट ए, ही हैज टू ऑप्शंस. इधर ही कुड गो विद द यूजुअल स्पीड, जैसे आया था वैसे ही जाता, या फिर उसके पास नई स्पीड से भाग भाग के जाएगा, राइट? नाउ विद द यूजुअल स्पीड, यूजुअल स्पीड से क्या होगा? जैसे वो आया तो ए तक उसको पहुंचने को 2 मिनट लगा, राइट? तो ऑब्वियसली ए से वापस जाने को भी 2 मिनट लगेगा. सो ये 2 मिनट और पूरे फ्रेश 10 मिनट्स मोर, राइट? बिकॉज ही टेक्स फ्रॉम बी टू सी और होम टू स्टेशन, ही टेक्स 10 मिनट्स टू ट्रेवल, राइट? एंड 2 मिनट्स टू गो फ्रॉम ए टू होम अगेन. एंड आई एम काउंटिंग फ्रॉम ए, ठीक है? वो वहां तक पहुंचने का 2 मिनट मत काउंट करना, ए से घर तक जाने का ये 2 मिनट और वापस घर से यहां जाने का फ्रेश 10 मिनट. तो टोटल ही विल टेक 12 मिनट्स. दिस इज नॉट द स्पीड, सॉरी, दिस इज व्हाट? टाइम. ओके, सो टाइम उसको लगा यूजुअल से 12 मिनट. अगर मुझे फास्ट जाना है उस बंदे को, तो हाउ मच टाइम ही विल टेक? अगर उसको वही ट्रेन पकड़नी है तो ही नीड टू रश, राइट? हाउ मच टाइम ही हैड? 10 मिनट्स. लेट्स से 5 बजे निकला, उसको 5:10 को पहुंचना था. ही रियलाइज एट 5:02, सो ही जस्ट नाउ हैव 8 मिनट्स टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस ABC, राइट? सो ए से घर भी जाएगा और घर से पूरा सी तक स्टेशन तक जाएगा इन 8 मिनट्स, बिकॉज इन टोटलिटी ही हैड 10 मिनट्स, आउट ऑफ विच ही हैड वेस्टेड 2 मिनट्स. इफ ही नीड्स टू कैच दैट ट्रेन, उसको ये पूरा A to B to C, ये पूरा जर्नी उसको 8 मिनट में कवर करना पड़ेगा, राइट? नाउ आई गॉट द रेशियो ऑफ द टाइम. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. जस्ट विजुअलाइज दिस पार्ट, अदरवाइज गाइज इक्वेशन से या नॉर्मल से थोड़ा सा लेंदी जाता है. व्हाट इज दिस रेशियो? 3 and 2, ये टाइम का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो विल बी व्हाट? 2k and 3k. I know the original speed, usual speed, that is 2k. So 2k should be equal to 3. My k will come out to be how much? 1.5. So अगर k 1.5 है, 3k कितना होगा? 3 into 1.5, 4.5 kilometer per hour should be his new speed, and that is the answer of this particular question. Okay, so I hope you have got this. कैसे किया ये? चल, let's move to the next question. Now again a favorite question, ठीक है, of examiners and mock test setters. Now what it says, there is a gun. Just let me draw this thing. Two guns are fired from the same place at an interval of 28 minutes, but a person in a train approaching the place hears
The second report 26 minutes after the first. Find the speed of the train if sound travels at 325 meter per second. Now remember, the bullet travels at the speed of the sound, right? तो यहां से just a second, let's say यहाँ से गन फायर हुई है and let's say here is a train approaching. Okay, here is a train and let's say यहाँ से बुलेट और गन फायर हो रही है. I'll just take a time reference, ठीक है, just for an understanding. Suppose पहला जो बुलेट फायर होता 11 बजे फायर हुआ and just I'm considering the negligible time to travel. Let's say यहाँ से इसने 11 बजे शूट किया और इसको भी 11 बजे ही सुनाई है, ठीक है. I'm considering negligible time in traveling just for an understanding sake. तो इसने 11 बजे शूट किया, इसने भी 11 बजे सुना, इस बंदे ने जो भी है, पहला शॉट. सेकंड शॉट इसने फायर किया 11:26 को. हैड ही बीन स्टेशनरी इन दिस ट्रेन ओनली, दिस स्टेशनरी, ये सेकंड शॉट कब सुनता? 11:26 को, राइट? बट दिस इज नॉट हैपनिंग, सॉरी, दैट इंटरवल इज 28. So second shot was fired at 28 minutes, so he must have heard at 28 minutes. But this is not the case happening. In how much time he is hearing the second sound? This guy after 26 minutes. Why this is happening? Because that he is also moving, right? So this guy is not here. He is moving somewhere here. Let's say this point. This is the train 2. Let's say this is situation 1. This is situation 2, right? And here is also gun. So gun इतना travel करेगी. Let's say instead of train 1, train 2, I will just erase this train first only, right? So train instead of here, his train is here as well as here. Now let's say this distance as AB. This point as A, this point as B. I'll make the AB distance as constant again. ठीक है. So अगर मेरा AB distance constant हुआ तो speed is inversely proportional to time. ठीक है. Just now pay attention here. This is what? This is bullet and this is train. Now concentrate on AB distance only. How much time this bullet take to travel distance A and B? ठीक है. ये bullet पूरा जो second interval था, bullet this to travel at this point, bullet takes 28 minutes, right? But bullet here, this man hears the sound at in after the interval of 26 minutes only. That means bullet travels here in 26 minutes only. That means पूरा complete चलने को 28 मिनट लगता है, यहाँ तक 26. That means A से B चलने को bullet को लगता है 2 minutes more, right? So time for this bullet is nothing but 2 minutes, right? Now this same distance is traveled by train also. Train को कितना time लगा होगा? If I think from a train point of view, जितना time बुलेट को यहां से यहां तक आने में लगा है, बुलेट ने नो डाउट ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है, उतना ही टाइम ट्रेन को यहां से आने में लगेगा, राइट? सो अगर बुलेट ने यहां से यहां आने को उसको 26 मिनट लगा है, तो ट्रेन को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने को भी 26 मिनट लगेगा, राइट? एज लेट्स से फर्स्ट जैसे ही साउंड हुआ 11 बजे, इट स्टार्टेड, सो इट हियर्स द साउंड एट 11:26. दैट मींस दिस ट्रेन this took time of 26 minutes to travel distance AB. Now I got the ratio 2:26, nothing but 1:13. So what is the speed ka ratio? It would be 13k and it would be 1k. Now I know bullet travels at the speed of sound, and what is the sound की speed? 325. हमारे हिसाब से कितनी है? 13k, right? So 13k should be equal to 325. That means मेरा k आ जाएगा 25, right? 13 2s are 26, 13 5s are 65. So that means speed of the train should be 1k, that is 1 into 25. So answer should be 25 meter per second. Okay, so that is the answer of this question. So you just need to get the ratio. अगर ये एक बार रेशियो पकड़ में आ गया, believe me, बहुत easy question हो जाएगा. Otherwise just try to think of a equation for this question, right? Let's take the another question. In this question, again the similar type, 2 guns are fired, but this time what is happening is that train is going away from here, that place, right? So इसीलिए second report 30 minutes के बाद. तो I'll just draw similar line diagram. So what happens, जैसे अगर मेरा पहला बुलेट यहाँ से यहाँ तक
Actually, it would have been in 28 minutes. Let's say this is the initial position of train, but train has traveled, let's say here, this is a new position of train. Now this bullet takes how much time? 30 minutes. Right? So earlier it used to take 28 minutes, now it takes 30 minutes. So tell me, bullet को कितना time लगा? Again, I'll make this distance AB as constant. Okay? If I want, I'll write it, distance AB as constant. So bullet, and this is train. So to travel A to B distance, the bullet took how much time? Bullet will take 2 minutes more. And similarly, this train will take how much time? Let's say 11 बजे शुरू किया, second वाला जो उन्होंने short सुना 11:30 को. That means that train traveled for 30 minutes. So what is this ratio? 1:15. Speed का ratio होगा 15 के 1 के. And speed of the train now is given 20, so that means 1k should be equal to 20. So मेरा k आ जाएगा 20, and what is he asking is 15k, that is 15 into 20, 300 kilometer per hour is the answer of this particular question. Okay, so I hope this particular point is clear, but these are good questions. Now let's move to the next one. Question number 19. This is a good question, but thoda sa teda hai. Before solving this question, let's do easy question first, then we'll see this. Okay. Just a second here. Yeah. Now, what it says, Shashi's driver leaves home. Let's say this is it. Shashi's driver leaves home at 5 p.m. picks Shashi at 6 p.m. daily from the office. ये home है. This is office. Right? घर से रोज 5 बजे निकलता है. He reaches office at 6 p.m. and they return home at 7 p.m. Okay, 1 hour जाना, 1 hour आना. One day his office got over at 5, so he started walking. So instead of, they meet somewhere between and they return home, right? So what is this daily scenario? अगर उसका मैं daily देखूं तो daily वो ऐसे जाता था office, right? उसको pick करता था and they used to come back. On that particular day, what happened? He gone, और वो बीच में कहीं तभी मिलके वापस आ गए यहाँ से. उसके वजह से they reached 30 minutes early, right? This is the scenario. Now let's say this 2 point again. This is A, and again let's say this is B. Again I'll make this particular point as this distance AB as constant. Okay. Now ये तो डिस्टेंस रोज ये ट्रैवल करता ही था. शशि का ड्राइवर उस पर्टिकुलर दिन शशि ने भी ट्रैवल किया डिस्टेंस AB, राइट? सो दिस इज द ड्राइवर का केस एंड दिस इज शशि. अब ये जो 30 मिनट बचा है, टेक्निकली ये ड्राइवर का बचा है, राइट? बिकॉज ड्राइवर तो रोज 7 बजे आता था, आज आधा घंटे पहले आ गया. सो टेक्निकली आप देखो तो उसका टाइम बचा है. क्यों बचा है? बिकॉज उस पर्टिकुलर दिन ड्राइवर को ये जो डिस्टेंस है AB ट्रैवल ही नहीं करना पड़ा, राइट? बिकॉज शशि बीच में ही मिल गया. अगर करना पड़ता तो ड्राइवर को कितना कैसे जाता, वो A तक जाता, B से और वापस आता. दैट मीन्स जो उसका 30 जो मिनट बचा है, क्यों बचा है? टू एंड फ्रो का. सो व्हाट विल बी वन वे टाइम? अगर मैं ड्राइवर का सोचो सिर्फ A to B जाने के लिए कितना समय लगेगा? ऑब्वियसली हाफ ऑफ इट. सो ड्राइवर वुड टेक 15 मिनट्स टू ट्रैवल, राइट? नाउ ये सेम डिस्टेंस शशि ने भी उस दिन ट्रैवल किया. शशि को कितना टाइम लगा होगा सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने में? डोंट थिंक ऑफ 15. हाँ, 15 नहीं हो सकता ना. सेम स्पीड होगी तो ये ऑफिस पहुंच जाएगा तो ये होम पहुंच जाएगा. जस्ट थिंक नाउ, ड्राइवर यहाँ पे रोज 6 बजे पहुंचता था ऑफिस, राइट? आज उसका 15 मिनट बचा, टेक्निकली वन वे. सो घड़ी में समय कितना हुआ होगा? जस्ट थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. 6 बजे से 15 मिनट पीछे आओ, दैट मीन्स 5:45, right? Now on that particular day, Shashi started walking at how much time? He started walking at 5 p.m. तो शशि ने 5 बजे चलना शुरू किया, ड्राइवर को मिला 5:45, राइट? तो शशि कितनी देर के लिए चला? 45 minutes. I think this is only what is asking. So answer of this question is 45 minutes only. Okay. So Shashi started
or walked for 45 minutes. Okay, now let's do that question which came in CAT earlier. Yeah, so this is the same scenario का question. अमन जस्ट यहाँ पे थोड़ी वैल्यूज डिफिकल्ट है, इसीलिए मैंने पहले सिंपलर वाला एग्जांपल लिया. आई होप यू अंडरस्टूड दैट. 4 बजे निकलता है ऑफिस, 5 बजे पहुंचता होगा, घर वापस 6 बजे आता है. ऑब्वियसली इट इज स्पीड, तो यूनिफॉर्मली डिवाइड होगा 2 आवर, 1 आवर जाने को 1 आवर आने को. इट्स नॉट एक्सेलरेशन, दैट स्पीड विल इंक्रीज ओवर द टाइम, राइट? So one day office of the wife was over at 4 p.m. only, so she started walking. They meet somewhere between and they came home 15 minutes early. So अगर अमन की कार की स्पीड 30 है तो वॉकिंग स्पीड ऑफ वाइफ बतानी है. ठीक है, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. तो जस्ट लेट मी टेक यू द विजुअल रिप्रेजेंटेशन. व्हाट वाज द डेली सिनेरियोस? कुछ ऐसे होता था, डेली जाता था, वापस दोनों आते थे दिस 6 बजे, राइट? पर्टिकुलर डे, उस दिन क्या हुआ? Wife also started walking, husband they meet somewhere between and they came back 15 minutes early. This is the situation happened that day, right? So just see. Again, I'll just explain this again. भले यहाँ पे लिखा हुआ है. Let's say this distance A and let's say ये office है उसका, right? This distance is B. So I'll again make AB distance as constant. ये जो AB distance है, हस्बैंड भी चल रहा था और वाइफ भी चल रही, राइट? हस्बैंड को कितना समय लगा? ये जो टेक्निकली जो 15 मिनट बचे ये हस्बैंड के बचे, राइट? ये क्यों बचे? बिकॉज उस पर्टिकुलर दिन हस्बैंड को ना ये जाना पड़ा डिस्टेंस ना आना पड़ा, राइट? सो अगर जाना पड़ता तो कितना टाइम लगता? वन वे, 15 मिनट आने जाने का बच गया, तो वन वे होता, अमन को लगते 7.5 मिनट्स, राइट? So 7.5 Aman would have took time to travel this distance AB. Now think from a wife perspective. वाइफ भी उस दिन चली, वाइफ कितने देर के लिए चली होगी? अब कैसे पहचानोगे? दिस इज अ सिंपल वे टू थिंक ऑफ अ टाइम. वो रोज कितने बजे पहुंचता था अमन? इफ यू थिंक फ्रॉम अमन पर्सपेक्टिव, डेली ही यूज्ड टू रीच एट 5 PM टू द ऑफिस ऑफ द वाइफ. उस पर्टिकुलर दिन उसको 7.5 मिनट चलना ही नहीं पड़ा, तो 5 बजे से 7.5 मिनट पीछे आओ तो क्या होगा? 60 मिनट में से 7.5 गया 52.5. सो 452.5 must be the time when they meet. On that particular day, wife started walking at 4 only and she is meeting Aman at 422.5. That means wife walked for 52.5 minutes. I hope this is clear. In the last example we have solved the easier number. यहाँ पे हल्का सा पॉइंट में, ठीक है? So if you solve this, the ratio comes out to be 1:7. So speed का रेशियो क्या होगा? 7k and 1k and the अमन की स्पीड दी थी 30, तो 7k should be equal to 30. So मेरा k आ जाएगा 30/7. So the walking speed of wife should be 30/7 km/h. So this is the answer of this particular question. So I hope this is clear. Okay, now let's move to the next question. This is already done. Okay, now another famous question, that is accident wala, right? A train meets with an accident and travels at 4/7 of the regular speed. Okay, just a moment. ठीक है, लेट्स से ये ब्लैक इज विदाउट एक्सीडेंट एंड रेड इज विथ एक्सीडेंट. ओके, नाउ इफ सेज अगर एक्सीडेंट थोड़ा आगे होता, जस्ट लेट मी ड्रॉ अनदर पैरेलल लाइन, एक्सीडेंट थोड़ा सा आगे होता, ठीक है? नाउ as I said, 4/7 of the regular speed. What is the 7 will be of the, जो भी मैंने कहा था ऑफ के बाद वाला क्या होता है? बेस होता है. तो मेरा 7 होगा रेगुलर स्पीड और द यूजुअल स्पीड विदाउट एक्सीडेंट एंड 4 इज द न्यू स्पीड विद द एक्सीडेंट, राइट? सो ये लेट्स से 7k रिप्रेजेंट
7k is the without accident वाली speed. Just let me use that color. So this is 7k, this is 7k. ये भी ब्लैक है, मतलब एक्सीडेंट यहां नहीं हुआ था. दिस इज ऑल्सो 7k. रेड इज द एक्सीडेंट वाला पार्ट. ठीक है, सो एक्सीडेंट के बाद इट इज 4k एंड अ 4k. दिस इज ऑल्सो 4k. नाउ दिस डिस्टेंस इज हाउ मच ही हैज गिवन. दिस डिस्टेंस ही हैज गिवन है 30 किलोमीटर. अगर 30 किलोमीटर आगे होता तो क्या होता. पहले केस में कितना लेट हुआ है वो. ही रीचेस 36 मिनट लेट, whereas in this case he would have been late by 21 minutes late only. Now see here, ये जो फर्स्ट सिनारियो है यहाँ पे कोई चेंज हुआ होगा क्या. नहीं, because here the distance is also same and speed is also same. 7k 7k, right? Similarly this is also 4k, this is also 4k. so जो भी चेंज हुआ होगा इसका, ये जो लेट वाला है, that happened in which patch. ये जो सेंटर वाला पार्ट है, right? So here there is no change. Also here there is no change because speed and distance are same. So just concentrate on this middle wala part. Again I'll name it as A and B. So again I'll give this distance AB as constant. ठीक है. Now what is the speed का ratio. अगर मैं ये usual that is without accident new. So what is the speed. Speed usual is 7, new is 4. So what will be the time is 4k and 7k, or right? And what is the difference. This is nothing but the 3k, right? ये यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितना है. 36 से 21 मिनट. दैट इज एक्चुअली, और ये लेट है तो व्हाट विल डू, यू विल सबट्रैक्ट. सो 36 minus 21 एक्चुअली डिफरेंस है 15 मिनट्स का, राइट? सो 3k शुड बी इक्वल टू 15 मिनट्स. So that means this should be how much. 15 in k मेरा आ जाएगा 5. अगर k 5 आ गया तो 4 5 20 minutes is the usual time. Now usual time or the regular time. ये 20 minutes क्या टाइम है. A से B जाने का टाइम at the usual speed. And I know this is the distance. So I'll get speed, right? तो यहाँ से यहाँ जाने को मुझे 20 minutes लगता है to travel the distance of 30 kilometer, right? So what should be the speed. Usual speed is nothing but what, distance by time. Distance is how much. Distance by time. Distance is 30, time is 30 minutes. ठीक है, I need to convert it into hours. So 20 by 60, that is 1/3. 3 will go up. So correct answer of this question is 90 kilometer per hour. Okay, so I hope this question is understood. Just आपको comparative scenario निकालना है, you will get the answer of this. Okay, let's move to the next question. कुछ भी doubt हो, you can always reach to us via Telegram or a comment section. ठीक है, we'll happy to answer. Now let's solve few CAT questions. Now this is a CAT 2006 question. बहुत अच्छा question था. देखते हैं क्या दिया है. If a man cycles at 10 kmph, he reaches a certain place at 1 pm. अगर 15 के स्पीड से गया तो 11 am. At what speed he must cycle to reach there at noon? That is 12, right? मुझे पहुंचने का तो टाइम दिया है, ठीक है, 12 बजे पहुंचना है. बट सबसे बड़ा इशू यहाँ पे कि घर से कब निकलता होगा. दैट मस्ट बी अ सेम टाइम, अदरवाइज अलग अलग टाइम होता तो सही ये क्वेश्चन में इशू होता, राइट? सो द फर्स्ट थिंग विच शुड स्ट्राइक इन योर माइंड इज टू गेट द डिपार्चर टाइम. What was his daily departure time? ठीक है, ये थोड़ा सा दिमाग में आना चाहिए. तो लेट्स से 10 की स्पीड थी. 10 की स्पीड से what he used to reach at 1 pm and 15 के स्पीड से used to reach at 11 am. What is the अब सर्टेन डिस्टेंस जो भी उसका होम टू ऑफिस जा रहा होगा, डिस्टेंस कांस्टेंट है, राइट? सो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो क्या रिलेशन है. डिस्टेंस कांस्टेंट, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, राइट? आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग. सो दिस इज 2:3. टाइम का मेरा रेशियो आएगा 3k एंड 2k. द डिफरेंस इज 1k. नाउ एक्चुअली हाउ मच इज द डिफरेंस बिटवीन 11 am and 1 pm? इट इज नथिंग बट 2 hours, राइट? So 1k is equal to 2, so k is equal to 2, so 3 2s are 6 hours and 2 into 2 4 hours. So just think here now, आप ऑफिस में पहुंचे 6 घंटे के बाद 1 बजे, 6 घंटे ट्रैवल किया एंड यू रीच्ड ऑफिस एट 1 pm. तो कितने बजे निकले होंगे घर से? जस्ट गो इन अ बैक ट्रैक.
राइट. सो 1 PM से अगर मैं पीछे जाऊँ 6 घंटे तो आई मस्ट have departed from my home at 7 AM, राइट. सिमिलरली यहाँ से भी वही आएगा, 4 घंटे ट्रैवल किया, आप ऑफिस पहुंचे 11 बजे, मतलब आप घर से निकले हो 7 बजे. ठीक है, दिस इज माई डिपार्चर टाइम. सो फर्स्ट टास्क इज डन, राइट. नाउ द सेकेंड थिंग, यू नीड टू गेट द डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम. कोई भी एक सेट ले लो, तो ये स्पीड 10 और ये टाइम 6, ऑलरेडी इंटू आर, तो नो नीड टू डिवाइड इट बाय 60. So 10 into 6, so my distance comes out to be 60 kilometers. Second वाले सेट से भी वही आएगा, 15 into 4, 60. Now I know I need to travel 60 kilometer. I need to leave home at 7 AM. तो मुझे 7 बजे घर से निकलना है, पहुंचना कितने बजे? 12 noon. That means I need to travel this entire distance in 5 hours. How much distance? 60 kilometer. So what is the required speed? What is he asking is nothing but required speed is distance by time. So I need to cover 60 kilometer in 5 hours. So I should go at 12 kilometer per hour ka speed. That is the answer of this particular question. Okay, so answer is 12 kilometer per hour. I hope this is clear. Let's now look at the next question. Okay, CAT 2008, again a good question. This is Arun, Barun, Kiranmala. Speed is given as 30, 40 and 60. Okay, now in this question, how will you get to know that distance is constant, right? So here the keyword is, please remember, here the keyword is overtake, right? Whenever you overtake a person, ठीक है, remember what is constant is a distance. जब भी हम किसी को ओवरटेक करते हैं, डिस्टेंस कांस्टेंट होता है ना. जस्ट थिंक फ्रॉम एनी एग्जांपल. लेट्स से यू आर स्टैंडिंग एट सम पॉइंट ए, आपका फ्रेंड ए से कुछ देर पहले निकला है, यू आर स्टार्टिंग सम टाइम लेटर, और उसको आपने बी पे जाके ओवरटेक किया. बोथ ऑफ यू स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट ए, भले टाइम आगे पीछे था, और ओवरटेक बी पे किया, तो बोथ ऑफ यू ट्रेवल्ड फॉर डिस्टेंस एक्चुअली ए बी, राइट. सो प्लीज रिमेंबर दिस, दैट ओवरटेक is nothing but the distance constant. Okay, so this is a keyword where I got to know that in this particular case distance is constant. Okay, and what he has said कि टाइम के बारे में क्या दिया, अगर ये t टाइम लगता है इसको, t hours, Barun started 2 hours after Arun, तो Barun t plus 2, and he is asking how many hours after Arun did Kiranmala start. So basically अरुण और किरणमाला का ये वाला उसने गैप पूछा है, राइट. दिस इज द क्वेश्चन इज आस्किंग. नाउ सी व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड. आई विल जस्ट ड्रॉ इट हियर. द रेशियो ऑफ स्पीड इज ए बी के, अगेन 3:4:6, राइट. 0 0 काट देंगे तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 1/3, 1/4, 1/6. एलसीएम इज व्हाट? 24, राइट. यस, इनफैक्ट 12 भी हो जाएगा, राइट. So 12. So this is nothing but 4k, this is 3k, and this is 2k. And I know this first gap is how 2 hours. तो 1k आ जाएगा मेरा 2 hours. So what is the distance time I got? k का वैल्यू जैसे ही 2 आ गया, so basically इसको लगता है 8 hours, इसको लगता है 6 hours, और इसको लगता है 4 hours. So what is this difference is 8 to 4 difference is nothing but of 4 hours is the required answer, right. C is the option. Okay, so I hope this particular point is clear. Please try again these questions on yourself. Now this is a recent question of the last year, CAT 2019. What it says, two cars travel the same distance starting at 10 and 11 AM respectively on the same day. They reach their common destination on the same point of time. The first car traveled for at least 6 hours, then the highest possible value of percentage second car must exceed by the first car. Okay, let's say this is car 1 and let's say this is car 2. Car 1 is starting at 10 AM, right. Another car is starting at 11 AM. And it's saying at least 6 hours. So let's say this is the time. मतलब कार 1 कम से कम 6 घंटे तो चला है, राइट. अब 10 बजे से 6 घंटे मतलब कितना बजा होगा? 4 बजे होंगे. तो इसने 11 से शुरू किया, तो दैट मीन्स सेकंड कार मस्ट हैव ट्रैवल्ड फॉर 5 hours ओनली, राइट. अब ये एटलीस्ट दिया है. अब कुछ और भी सिनेरियो हो सकता है. T1, लेट्स से T2 हो सकता है 7 घंटे, ये 6 घंटे चलेगा.
थर्ड टाइम लेट से ये हो सकता है 8 घंटे 7 घंटे एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट? इफ आई टेक द एक्सट्रीम केस, this might be possible that this car traveled for 10,000 hours and this car traveled for 1 hour less, that is 9,999 hours, right? Now look at the question. What is saying? Highest possible value of percentage, because it's a percentage. Percentage क्या होता है? Something by something. So अगर मुझे fraction highest चाहिए तो my denominator should be lowest, as low as possible, right? So which case should I take? I should take the first wala case, that is 6 and 5, then only it is possible, because 10,000 and 4 times 9, practically they are same, very negligible difference, right? Percentage will go very low, but I want maximum percentage, right? So this case I'll consider. So as distance is constant, let's say car 1 and a car 2, what is the time ka ratio? Time ka ratio is 6:5. So speed ka ratio should be 5:6. Now what is he asking? Second car exceeds speed by how much? How much second car exceeds? 5 to 6, that is exceeds by 1. That off के बाद कौन है? First car. So you should divide it by 5, as I earlier said also. So 1 by 5, nothing but 20% is the answer of this particular question. Okay, so I hope this is clear. Please revise this well. Okay, let's move to the next question now. Now CAT 2005, again can you see the keyword overtake? What does the overtake means? I just said overtake is nothing but, just remember this thing, different constant scenario. ओवरटेक में हमेशा डिस्टेंस कांस्टेंट होता है. दिस इज अनदर थिंग. मीट में टाइम कांस्टेंट होगा, राइट? अगर दोनों दोस्त घर से 10 बजे निकले और वो मिल रहे 11 बजे, दैट मीन्स बोथ ऑफ देम ट्रेवल्ड फॉर 1 hour. डिस्टेंस माइट बी डिफरेंट, राइट, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड. ऑल्सो रेसेस में टाइम इज कांस्टेंट. डोंट थिंक कि रेस में डिस्टेंस कांस्टेंट होता है. वी आर नॉट आस्किंग अबाउट द डिस्टेंस ऑफ द ट्रैक. ट्रैक तो ऑब्वियसली वही के वही रहने वाली है, राइट? When we talk about distance, it's a distance covered, right? रेस में क्या सब लोग सेम डिस्टेंस नहीं कवर कर सकते ना? अगर सारे लोग सेम डिस्टेंस कवर करेंगे तो ऑब्वियसली एवरीवन विल बी विनर, राइट? इन पर्टिकुलर टाइम किसने कितना ज्यादा दौड़ा वो विनर होगा, राइट? अगर 10 बजे रेस शुरू हुई और लेट्स से विनर क्रॉसेस द फिनिशिंग लाइन एट 11, सो 1 hour में ही विल क्रॉस फिनिशिंग लाइन, सेकंड वाला थोड़ा पीछे, राइट? सो प्लीज रिमेंबर, रेसेस में टाइम कांस्टेंट होगा. विल डू दिस इन वेरी डिटेल, राइट? But just time being, please remember this. Overtake में distance constant, meeting में time constant, race में भी time constant. Now let's look at this CAT 2005 का question. As it is overtake, so what does the overtake word suggest? Overtake word suggests that distance is constant. Okay. So these are the two persons, Ram and Sham. What is the distance, speed of them? Speed है 5 और 10. सो व्हाट इज दिस रेशियो? 1:2. सो टाइम का रेशियो क्या होगा? 2k एंड 1k. टाइम के बारे में क्या दिया है? One guy started at 9 AM, another guy started at, that is Sham, 9:45 AM. So what is the gap of them? What is the difference of the time? Is nothing but the difference of the time is 45 minutes, right? So हमारा difference है 1k, 2k minus 1k. 1k should be equal to 45. तो मेरा k आ जाएगा 45. That means Ram would take 90 minutes and Sham would take 45 minutes. So overtake कब करेंगे? किसी के भी रेफरेंस से लो, आंसर सेम आएगा. राम ने याद रखना 9 बजे शुरू किया था और इस बंदे ने, शाम ने 9:45 को शुरू किया था. So 9 बजे से 90 मिनट. 90 मिनट इज नथिंग बट 1 hour 30 minutes. So 9 से 1 hour 30, that means they will overtake him at 10:30. Or you can take from Sham perspective also, 9:45 से 45 minutes, the timing will be 10:30. So overtake will happen at 10:30 AM. Okay? दिख रहा है कितना सा easy सा question है once you understood the concept well. Let's take the next question. Okay, now in this particular question, ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन कि जहां पे CAT 2018 का था ये. अब यहाँ पे एक्चुअली रेशियो नहीं लग पाएगा बिकॉज दोनों भी चीजें डिफरेंस में दी है, राइट? कि स्पीड कहाँ है, उसने फास्टर, टाइम भी दिया है लेस. सो एक्चुअली अगर आप रेशियो भी लगाने की कोशिश करो इसमें नहीं आएगा बिकॉज कुछ भी रेशियो ओपन नहीं होगा, राइट? एवरीथिंग इज गिवन इन द टर्म्स ऑफ डिफरेंसेस, राइट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, डजंट मेक एनी सेंस. सो जस्ट रिमेंबर वन थिंग, दिस इज अ डिराइव्ड फॉर्मूला ऑब्वियसली ऑफ द टू केसेस.
ये जब पहले के जो क्वेश्चन थे उसमें भी लग सकता था, राइट? सो डिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ द स्पीड, जो भी छोटा बड़ा उसमें से माइनस कर देना, इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम. आई होप दिस इज क्लियर. दिस इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ टाइम. ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला. द क्वेश्चन विल बिकम वेरी इजी, अदरवाइज it will take some time to solve this question. Okay, so just plug in that formula, you will get the answer. So what it says here, had he traveled at the 3 kilometer faster, so let's say earlier speed मेरी s थी, so अभी की speed कितनी होगी? s plus 3. And what is the difference of s plus 3 and s? Nothing but s will get cancelled out, 3. I just want a difference. And what is the difference of time? 40 minutes less. Do remember, less indicates nothing but the difference only. तो ये 40 मिनट है divided by 60 because I want answer in hours. Now the same distance I should get by if it decreases his speed by 2. So s into s minus 2, difference will be what? 2 only, and here it is 40 minutes late, so it is 40 by 60 only, right? So just solve this. What will get? This 40 60 will get cancelled out, right? This s and s will get cancelled out, 40 60 will get cancelled out. What remains is this, so 2, just take it here. So it would be what? 2s plus 6 should be equal to 3s minus 6. So I'll get s as 12 kilometer per hour. This is what? Nothing but the speed. But what I want a distance. So just plug in any of the formula. So let's say if I plug in the first case only. So if s is 12, so what will be the distance here? 12 into 15 by 3 into 40 by 60, right? So 15 ones are 15 fours are 4 ones are 4 tens are, and 3 ones are 3 fours are 10 fours are 40 kilometers should be the final answer of this question. Okay, so I hope this is clear. अगर मेरा रेशियो नहीं चले तो just remember this formula. इसके पहले के भी क्वेश्चन इससे हो सकते थे, but not obviously all, right? But in this particular case this will come really handy. Just take one more question on the same scenario, the last question on this particular distance constant concept. So this is question number 27. What it says, Ramesh walks to his office every day at certain speed. If he walks faster by 2 kmph, that is increase the speed by 2, then he takes 30 minutes less, right? तो दोनों भी difference के terms में दिया है, time भी speed भी. On another case, if he walks slower 1 kmph, he will take 30 minutes less, right? So I hope you remember that formula. Believe me, that comes very handy. Okay, so क्या था वो? Distance is equal to speed 1 into speed 2 upon difference of speed s1 s2 into difference of time. So if I apply it here, distance in the first case speed is increased by 2, so s plus 2, so difference is obviously 2. In this case is 30 minutes divided by 60. Second case is speed is decreasing by 1, s minus 1 divided by 1. He takes 30 minutes more. More indicates nothing but the difference only. So अच्छा, same ही चीज हो गई वापस से, right? 30 60 gone, s is gone. So how much it will be now? S plus 2 should be equal to 2s minus 2, right? So basically s comes out to be 4, and I think he's asking s only, right? So speed is 4 kilometer per hour, so answer should be second option. Okay, so I hope guys this is clear. कुछ भी doubt हो, you can always reach to us via comment section or a telegram group. Link is given in the description. ठीक है, I hope you like. Thank you everyone.